अस्सलाम वालेकुम हेल्थ लवर्स के, ये कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर रहूं, क्योंकि मैं एक सीरीज़ ऐसी लेकर आ रही हूं कि जिसमें हमें हेल्थ वीडियोस देखने का कुछ तो फ़ायदा हो। हम एक के बाद दूसरी वीडियो देखते हैं, दूसरी से तीसरी, और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की कोशिश ही नहीं करते। जब तक हम प्रैक्टिकली हेल्थ स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कैसे बेहतर हो जाएंगे। और हेल्थ तो सबसे बड़ी नेमत है, इसका अंदाज़ा तो हम सबको ही है, लेकिन जब तक कोई एवेलुएट ना कर रहा हो और हमें कुछ थोड़ा सा मोटिवेट ना कर रहा हो और हमें चेकिंग का डर नहीं हो तो हम ज़रा ढीले पड़ जाते हैं ना। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? मैं चाहती हूँ कि हम लोग डेली जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, एक दूसरे को चैलेंजेस दें, एक दूसरे को मोटिवेट करें। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना ये होगा कि मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर हम एक्टिव होते हैं। इसका ख्याल मेरे जहन में कैसे आया? मैं काफ़ी रिसर्च करती रहती हूँ, वीडियोस देखती रहती हूँ, कुछ चीज़ों पे इम्प्लीमेंट भी करती हूँ, लेकिन पूरा नहीं होता है इम्प्लीमेंट। इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसने इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अटेंशन ग्रैब की है और बहुत लोगों ने उसको शेयर किया है। उसकी रीज़न ये है कि एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं जो कि आइज़ के हवाले से बहुत सिंपल और बहुत अच्छी टेक्निक्स बताते हैं, जिससे आपकी आइज़ को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अभी मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूंगी, आप लोगों ने भी अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आप लोगों ने देखी हुई है ये वीडियो, नहीं देखी हुई, और आपने इनमें से कुछ एक्सरसाइजेस की या वीडियो देखने के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद स्टार्ट की हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। If you have vision problems, then you should watch this video. Let's listen to Andrew Huberman, an American neuroscientist and tenured professor in the Department of Neurobiology at the Stanford University School of Medicine. He shares valuable information about how you can improve your eyesight very easily. If your visual behavior isn't right, and I do believe we should always start with behaviors and then think about nutrition, supplementation, etc. If your behaviors around vision aren't right, you cannot expect to have good, healthy eyesight for a long time, meaning throughout your lifespan. And if your vision is already poor, many of these things that I'm talking about today, perhaps all of them, will improve your vision to some degree. And if your vision is starting to go, then doing these behaviors is likely to really enhance the quality of the vision that you will build and maintain over time. These days, we're spending a lot of time looking at things, mainly our phones up close and computers up close, and we are indoors. If you are a young person, and even if you are 25 or older, and you are spending a lot of time looking at things up close, and you are not allowing your vision to relax, in other words, you are not giving your lens the opportunity to flatten out and for these muscles to relieve themselves of this work, you may or may not have migraine headaches. You may or may not have headaches. You might, and that could be the cause of those. But you are also training your eyes to be good at looking at things up close and not far away. And as a consequence, you are reshaping the neural circuitry in your brain. And it is not good. It is not healthy to only look at things up close. Now, there are a lot of recommendations out there right now, especially with all the lockdowns of the last, 12 to डॉक्टर ह्यूबरमैन यहाँ पर जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा बता रहे हैं वो ये है कि बिहेवियर अराउंड आइज़ जो है, पहले तो हमारा सही होना चाहिए। अगर हम बिहेवियर अपना सही कर लेंगे तो हमारी आई साइट ऑटोमेटिकली जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। सर्टन केसेस में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सर्टन केसेस में इम्प्रूवमेंट आएगी। और हमें, क्योंकि आजकल हम स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, तो हमें करीब की चीज़ें देखने की आदत होगी। वैसे भी हम इंडोर्स में रहते हैं, तो अगर हम अपनी आंखों को सिर्फ करीब की चीज़ें देखने के लिए ट्रेन करेंगे तो हमारी ब्रेन के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आगे चलते हैं। You want this lens mechanism to be very elastic. You don't want it to get stuck in that configuration of looking at things up close. Accommodation is a wonderful feature of your visual system, but you don't want to push that too hard, too often, or for too long. You want to view the horizon. You want to get outside, not just to lighten the load on your mind or to think about other things, but to maintain the health of your visual system. In other words, you want to exercise these muscles, and that involves both the lens moving and getting kind of thicker and relaxing that lens. And the relaxing, सबसे पहले उन्होंने टिप दी कि हम क्योंकि इंडोर्स में रहते हैं, अगर हमारे लिए पॉसिबल, या तो हमें बाहर निकलना चाहिए और हमें होराइजन और यानी चीज़ें देखनी चाहिए। देखें ना, अगर हम नहीं बाहर निकल सकते तो हमें चाहिए कि खिड़की खोल दें और खिड़की खोल के बाहर दूर तक अपने शिकार को ढूंढें। शिकार मीन्स होराइजन और चीज़ें, परिंदे देखें, जो भी चीज़ हम दूर तक देख सकते हैं वो हम देखें। at least every 90 minutes of looking at things up close, or even if you're looking at a screen, television screen, or you're watching a movie, or you're indoors, for every 90 minutes of that,
you ideally would have at least 20, probably more like 30 minutes of being outside, ideally, but if you can't be outside, of up close vision. Now you might say, that's impossible. How am I supposed to do that? I'm in an office or I'm in a building. Get to a window, get outside if you can do it safely, get onto a balcony, and just let your eyes relax. Many people are experiencing severe vision problems because they're not getting enough sunlight during the day. They have sleep problems because they're not viewing sunlight early in the day. And as I've mentioned in previous episodes, they're getting a lot of artificial light stimulation of the eye in the middle of the night. All of this is through the visual system. So migraines, fatigue, challenges with your eyesight getting worse as you age, or even in young people, there's at least according to the articles, they describe it as this epidemic of myopia. Our visual system is exquisitely tuned to motion, not just our self-generated motion, but the motion of things around us. And one of the things that it does is something called smooth pursuit. Smooth pursuit is our ability to track individual objects moving, as the name suggests, smoothly through space in various trajectories. You can actually train or improve your vision by looking at smooth pursuit stimuli. And that sounds really boring. What you can do is, and I'll provide a link to some that I think are pretty good that are used in various clinics, ophthalmology and optometry clinics. You can actually take a few minutes each day, or maybe if you don't do it each day, you could do every third day or so, and actually just visually track a ball. Sometimes it's moving in kind of an infinity symbol. Sometimes it's more of a sawtooth. Sometimes it's changing speed. Sometimes the cue that you're following, the little target, is dilating and contracting. This is going to keep the extraocular muscles conditioned and strong and allow you to have a healthy smooth pursuit system. Remember, the brain follows the eye. Brain follows the movement of eye. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हमें जो जैसे मैंने ये पहले भी बहुत सुना था कि जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो शेप्स होती हैं, उनको ट्रैक करना चाहिए. ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप ऐसे देखें, इन्फिनिटी साइन बनाएं, उसको ट्रैक करें. कोई बॉल मूव कर रही है, हवा में जा रही है, गोल्फ खेला जा रहा है या टेनिस खेली जा रही है, उसको आप ट्रैक करें तो आपकी आइज़ की जो ऑक्यूलर मसल्स हैं उनको आप ट्रेन करेंगे. और इससे पहले उन्होंने बात की थी अकोमोडेशन की. अकोमोडेशन एक बहुत अच्छी फीचर है, यानी आपकी आइज़ की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है दूर देखने की और नज़दीक देखने की. ठीक है, फोकस, यानी जब आप करीब की चीज़ों को देखते हैं तो आपकी आइज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और वो करीब की चीज़ों को फोकस कर लेती हैं सही तरीके से. तो हमारा अभी ये फोकस काफ़ी हद तक बहुत से लोगों का ख़राब है. उसको सही करने के लिए वही ओल्ड एज पेंसिल, जो पेंसिल एक्सरसाइज होती है कि आपने पहले उसको दूर ले जाना, फिर उसको करीब कीजिए और जहाँ पे वो ब्लड नज़र आने लगे ना, डबल विजन, वहाँ से थोड़ा सा दूर करके थोड़ी देर देखिए, आइज़ को रिलैक्स कीजिए और फिर उसको दूर ले जाइए. जो एक्सरसाइज है ये आपने 15 सेट्स करने हैं दिन में 3 दफ़ा, और बहुत इजीली ये 15 to 20 मिनट्स में ये हो जाएगी. और इसकी आप खुद देखेंगे कि आपकी जब ये आप कर रहे हैं ना, तो आपकी आंखों में से पानी भी समटाइम्स निकलेगा और काफ़ी हद तक रिलैक्स होंगी आपकी आंखें. इसको कीजिए, ट्रैक कीजिए. अगर आप कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं तो विंडो जो है उसके पास जाएं वक्फे से. 90 उन्होंने कहा एवरी 90 मिनट्स, हर 90 मिनट्स के बाद आपको तकरीबन 20-25 या आधा घंटा आइडियली जो है वो बाहर निकलना है, बाहर देखना है. अगर आप नहीं ऐसे कर सकते तो थोड़ा थोड़ा तो कीजिए ना. ये चीज़ें आप बताइएगा, इसको कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. और अभी मैं और भी इनकी जो आईज़ एक्सरसाइज जैसे अकोमोडेशन है, आई विजन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. इनको अभी हम मज़ीद रिसर्च करेंगे डॉक्टर एंड्रियो को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनोखे कॉन्सेप्ट्स लाते हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स लाते हैं जो इजीली हम फॉलो कर सकते हैं और हमारी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ. ज़िंदगी सुल्तान को दीजिए इजाज़त और मुझे आपका फीडबैक लाजमी चाहिए नीचे. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.